Good morning, all of you. Welcome back to the online classes of TMPS. Today we'll be discussing a very important topic and a very interesting topic for class 8. So class students, please back up your seat belts and please be tight on your seats. We'll be having a beautiful session of history today. We'll be discussing about the age of revolution, a very interesting topic in the modern history. Basically what happened, it is a very interesting topic because we'll be covering two portions, that is the French Revolution as well as the American Revolution. So what is age of revolution? Let's get started. What is age of revolution? Age of revolution basically means where the powerful monarchies and the colonial kingdom which was being established by the Britishers was overthrown by the common masses. In the French Revolution, basically what happened, the monarchy was there was the rule of kings which were there that were being overthrown, and in the American Revolution the Britishers established their colony in the America, and they were exploiting the Americans, and finally the Americans overthrew the Britishers and established their democracy there. So it's a very interesting chapter. Please pay attention to this, watch this video, and you can re-watch it, you can again see everything would be crystal clear and you'll be getting all the things in details. So first of all, we'll be starting with the French Revolution. What happened? The French Revolution basically took place after the American Revolution, but French Revolution we are talking first because we are starting from the Europe portion. What happened? French Revolution basically started in 1789 and lasted for 10 long years till 1799. What happened? Well, this was a period of 10 long years in which the revolution took place, and finally what happened in 1799, that Napoleon Bonaparte, Napoleon was basically the person who overthrew the French monarchy and established a strong French power, where he told that the people would be having the rights and nobody can exploit the general public and masses on the basis of their caste, color and creed system. What happened? He wanted to establish the uniform civil code. That is why Napoleon was considered to be the brave general and savior of masses among the French in the beginning. We'll be studying about this. Let us start this topic. What happened? That we have to just take the brief. What was happening in the French society and what led to the French Revolution. Let's get started. Come on. What happened? That there was social inequality in our French society. Basically the French society was having social inequality. The women were not allowed as equal status as the men. They were being exploited. There was a big difference between the rich and the poor. The society was divided into three classes. Basically what happened, the first class was the aristocrat class. Aristocrat class basically was the class that was of the ruling class, and they were having a luxurious life, they were enjoying a lot, they were having all the fun and all the enjoyment whichever there was in the world. And the second class consisted of the clergymen. Basically what happened, this class was the serving class for the aristocrat, ministers, the courtmen, they were the clergymen. They were also exploiting the general masses. The both aristocrat and the clergy class were not paying taxes, and they were enjoying a lot on the taxes which were being collected from the general public. What happened? That the whole burden of the taxes was on the third estate. Basically what happened, the common masses, peasants, workers, the farmers, peasants, they were all constituted in the third estate. They were being exploited to the fullest. They were being forced to pay lots of taxes. All the tax burden was on this class. It was being said that even the air in France was being taxed. The people had to pay all sorts of taxes on water, wood, forest, as well as it was being said that even to breathe in France was having lots of taxes, and the people were getting exploited day by day. So they wanted to overthrow the French monarchy. What happened? There was an incident also of Louis XVI and Marie Antoinette. What happened? Marie Antoinette was a widow, and what happened? It was decided that in the French, the
king of France cannot marry a widow. But what happened that Louis XVI fell in love with Marie Antoinette. He left the French and took away all the gems and jewels and ran away with Marie Antoinette. So what happened? The kings and the nobles who succeeded Louis XVI, they introduced more and more taxes. They levied more taxes on the general masses for their own luxury, and the general masses were being exploited. So in all the manner, the general public were being exploited. Then came the rise of the middle class. What happened? The middle class is the most important class in any society because it links up the rich and the poor. So what happened? A class of philosophers developed. Who were the philosophers? Who were having the ideas that what was going on the rest of the world and how all the things can be connected. अब क्या हुआ? एक ऐसी क्लास आ गई जिसका नाम था फिलोसफर्स की क्लास. फिलोसफर्स क्या हुए? फिलोसफर्स वो लोग थे जिन्होंने बताया कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है और हमें किस तरह से दुनिया को एक साथ लेके चलना चाहिए और हमारी सोसाइटी में क्या चीजें गलत हो रही हैं. अब मैरी एंटोनी वाला केस हो गया. लुइस 16 उनके साथ पूरे खजाना लेके भाग चुका था. प्लस थर्ड स्टेट पे बहुत सारा टैक्स बर्डन पड़ रहा था. थर्ड स्टेट को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. सो जो फिलोसफर्स थे उन्होंने बताया कि दैट द अमेरिकन सोसाइटी दे had a war with the Britishers and the equality is there. So three basic ideas came into power. What happened? The three basic ideas were liberty, equality and fraternity. तीन आइडियाज आ गए हमारी एग्जिस्टेंस में फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जिसका नाम था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी. अब यहाँ पे बोला गया कि हर किसी को लिबर्टी मिलनी चाहिए, दैट एवरीबडी इज फ्री. फ्रेटर्निटी मींस दैट एवरीबडी शुड बी हैविंग ब्रदरहुड, दे शुड बी लिविंग टुगेदर, नो क्लास डिस्क्रिमिनेशन. And freedom, equality means everybody should be equal and taxes should be borne by everybody and it should not be only lived on the third estate. जब ये सारी चीजें हुई तो जब सोसाइटी में सारी चीजों का बढ़ावा मिला तो लोगों को लगा नहीं अब हमें जो बोलते हैं ना पानी सर के ऊपर जाने लगा. तो दे डिसाइडेड टू ओवरथ्रो द फ्रेंच मोनार्की. अब इसका स्टार्टिंग क्या हुआ? इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रिजन, it was considered to be a very important prison of the French, that was Bistros prison. Bistros prison को इन्होंने पूरी तरह से ब्रेक किया. वहां से जितने भी फ्रेंच सोल्जर्स ने बड़े बड़े प्रिजनर्स इकट्ठा किए थे, बेसिकली दोज हु वांटेड इंडिपेंडेंस, दोज हु हैव रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट द मोनार्की, उनको छुड़ाया. और इट वाज द ऑफिशियल स्टार्टिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इसी के बाद एक इंसिडेंट हुआ जिसका नाम है टेनिस कोर्ट ओथ. टेनिस कोर्ट ओथ इंसिडेंट क्या था? ये बेसिकली 1789 में हुआ, जहां पर बेसिकली द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट जॉइंट टुगेदर एंड दे प्रॉमिस दैट दे विल बी हेल्पिंग ईच अदर फॉर अटेनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फॉर्मिंग representative type of government, and they should always be united against any autocratic rule of the French monarchs. तो ये था टेनिस कोर्ट. अब नेपोलियन के बारे में बात करते हैं. नेपोलियन बोनापार्ट बेसिकली प्लेड अ पिवोटल रोल. पिवोटल मतलब समझते हो? एक धुरी, एक पूरा एक उसने एक्सेस का काम किया जिसने पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक साथ जोड़ा. What happened? Napoleon was a very brave general in the French army. Basically वो फ्रेंच आर्मी में ही जनरल था. बहुत छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ सीख लिया था. He was a brave and an intelligent man. And in 13 years of age he was a general in the army. Basically he was there in Morocco. मोरक्को में क्या हो रहा था? वहां पर फ्रेंच ने एक आपकी पूरी की पूरी कॉलोनी बना के रखी थी. And he was posted there. When he heard about the unrest which was there in the France, he came back. वो वापस आया. And he organized a armed revolution. He organized an armed revolution. इसका क्या मतलब है? उसने एक armed revolution इकट्ठा किया, लोगों को साथ में जोड़ा और कहा कि हम आपको न्याय दिलाएंगे. I'll be giving you the justice against this French monarchy. और उसी वजह से उसको बोला गया the savior of the masses. He showed the people that he'll be the savior of the masses. He is there to help others. He is there to help the civilians of France. और लोगों ने उसका साथ दिया. He told about uniform civil code. What was uniform civil code या uniform code? He told that everybody basically would be having same right. इसमें एक पॉइंट आ जाता है right to man. Right to man का कॉन्सेप्ट आया कि everybody would be having same rights and nobody would be rich or poor by birth.
and no property would be inherited by anybody. All the property would be belonging to the state. सारी की सारी property state की होगी, कोई भी जन्म से rich या poor नहीं होगा, and the people would be having equal rights. तो ये लोगों को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो exploit हो रहे थे उस समय, और इन्होंने इनका साथ दिया और फ्रांस में फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट रूल करना स्टार्ट किया, एंड इट वाज बेसिकली द एंड ऑफ मोनार्की इन द France and the establishment of the representative type of government, but it was not totally a representative government. इसके बाद भी फ्रांस में बहुत सारा अनरेस्ट हुआ नेपोलियन की वजह से, जो हम आगे वाले चैप्टर्स में रीड करेंगे. नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन दैट इज अमेरिकन रेवोल्यूशन. आई होप फ्रेंच रेवोल्यूशन मजा आया हो, फिर से उसको देखिएगा. नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, अमेरिकन रेवोल्यूशन. अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या था, ये और मजेदार टॉपिक है. आप सबने अमेरिका के बारे में सुना है, यूएसए के बारे में सुना है, सुपर पावर है दुनिया का. So सुपर पावर बनने में सुपर पावर को समय लगता है. What happened? It was a colony of Britishers. अब ये मत सोचिएगा कि केवल इंडिया ही को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया हुआ था. ब्रिटिशर्स ने अमेरिका को भी कैप्चर किया हुआ था. ब्रिटिशर कैप्चर्ड अमेरिका एंड इट वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन. What happened? There was an armed rebellion against the Britain in America also. 1775 से लेकर जो आपका 1783 तक का समय है, इसको कहा जाता है बेसिकली द पीरियड विच इज नोन एज द अमेरिकन रेवोल्यूशन. अब अमेरिकन रेवोल्यूशन बेसिकली व्हाट हैपेंड, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो था इसको फाइनली कैसे इंप्लीमेंट किया गया, क्या क्या इसके कॉजेस थे, लेट इट स्टार्ट. व्हाट हैपेंड दैट द ब्रिटिशर्स, एज यू नो, द कॉलोनीज आर देयर टू एक्सप्लॉइट. अगर किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना होता तो उस पर कब्जा क्यों करेगा, उस पर कैप्चर क्यों करेगा. सिंपल सी चीज है, आप तो खुद ही जानते हैं ये चीजें, तो आपको खुद ही मालूम है. तो व्हाट हैपेंड, द अमेरिकन्स वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द फ्रेंच. दे वर एक्सप्लॉइटिंग इट फॉर देयर सेल्फिश मोटिव, एंड द ब्रिटिशर्स. सो व्हाट हैपेंड, द ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग द अमेरिकन्स for their selfish motive. They were making lots of profit from America. So what happened, there was a war which was fought in Britain, and the Britain was having heavy expenditure. So what happened, they decided कि हम लोग कॉलोनीज से बहुत सारा टैक्सेस लेते हैं, जिससे कि what would happen, our economy would again come into track and we'll have luxurious life. तो इन्होंने एक स्टैम्प एक्ट स्टार्ट कर दिया अमेरिका में, जो 1765 में इन्होंने किया. What was Stamp Act? The Stamp Act basically was started in 1765. In that Stamp Act, it was being told कि Americans, if they have any property, if they do any agreement, if they do any basically contract, there should be a Stamp Act. There should be a placing of stamp by the British government. Otherwise, it would be treated as illegal. Basically, what happened? वो स्टैम्प लगाने में बहुत सारा पैसा ले रहे थे. रजिस्ट्री जिसे आपको कह सकते हैं आप, उसको करवाने में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था, और उससे क्या हो रहा था कि अमेरिकन एक्सप्लॉइट हो रहे थे और ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा उससे फायदा उठा रहे थे. एंड ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग, इनकी जो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज थी वो बढ़ती चली जा रही थी. अब नाउ व्हाट हैपेंड दैट देयर वाज अ बॉस्टन मैसेकर. अब देखिए बॉस्टन टी पार्टी यहाँ लिखा हुआ है, उससे पहले बॉस्टन मैसेकर हुआ. बेसिकली जो एक्सप्लॉइटिव पॉलिटिक्स थी, जो अमेरिका के खिलाफ ब्रिटेन बढ़ाता चला जा रहा था, तो अमेरिकन ने उसके खिलाफ सड़क पर उतरे. दे केम ऑन द रोड एंड दे स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स, पेबल्स, snowballs on the British soldiers, in which many people were died because British soldiers also retaliated. They killed the people. It was known as Boston Massacre. इसके बाद एक इंसिडेंट हुआ कि they also taxed the tea. Basically, what happened? Tea was the essential beverage of Americans. Americans liked tea very much. उन्हें टी बहुत पसंद था. तो what happened? The Americans liked tea so much and it was a very important drink for them. तो ब्रिटेन ने क्या सोचा कि भाई अमेरिका में जो चाय आती थी वो चाइना से आती थी, और चाइना भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी इस समय. तो उन्होंने सोचा कि टी पे भी टैक्स बढ़ा देते हैं, जिससे और ज्यादा फायदा मिले. अब भाई जिसको पैसा चाहिए वो किसी तरह से भी हासिल करने की कोशिश कर रहा था. एंड नाउ व्हाट हैपेंड, इन्होंने जब इसको बढ़ाया, तो जब जैसे ही टी पे टैक्स बढ़ा तो कॉमन मासेस पे इफेक्ट होने लगे. व्हेन द कॉमन मासेस वर इफेक्टेड, तो व्हाट हैपेंड, दे डिसाइडेड टू raise their voice against this raise of tax. अब इन्होंने क्या किया, पूरी बॉस्टन टी पार्टी, बेसिकली बॉस्टन इज अ पोर्ट. Boston is a port where the ships are loaded and unloaded. It's a place where the port is there. So Boston में ये लोग जब वहां से टी का पूरा एक शिप आया जिसमें टी के चेस्ट थे. चेस्ट मतलब क्या होता है, संदूक जिसमें अंदर से बहुत सारे टी के बैग्स वगैरह रखे थे. उन्होंने पूरे का पूरा टी के बैग्स के साथ
उस शिप को डुबो दिया। ये बेसिकली हुआ था 1773, जिसमें इन्होंने पूरी की पूरी टीम के को पूरे के पूरे समुद्र में डाल दिया, समुद्र में डुबो दिया जिस शिप से आया था पूरी शिप को। और वो पूरा, जब सिंपल सी चीज आप जानते हैं, अगर समुद्र में कभी चाय या किसी भी जगह चाय पत्ती टी लीव्स पड़ जाएंगी तो इट वुड बिकम रेड, तो वाटर क्या हो गया, रेड हो गया। And this event is known as Boston Tea Party, which is the official starting of the American Revolution against the Britain. What happened? The Britain also realized, Americans are now fighting with their full zeal efforts, and they want that the Britishers should be thrown out from their country. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन लोगों को कुछ डेलीगेशंस दे दें, कुछ इनको फायदे दे दें जिससे शांत हो जाए। तो इन्होंने फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइज की। बेसिकली फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज हुई थी 1774 में ऑर्गेनाइज हुई। बेसिकली 1774 में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुई, जिसे फिलाडेल्फिया कांग्रेस भी कहते हैं, या इसे पेंसिल्वेनिया एक जगह है वहां पर, पेंसिल्वेनिया में फिलाडेल्फिया कांग्रेस के नाम से जाने जाते हैं। सो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में 13 जो स्टेट्स थे अमेरिका के, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। जॉर्जिया को छोड़कर सब लोग ने रिप्रेजेंट किया। और बेसिकली वहां पर डिसाइड हुआ कि अब हमें डिसाइड करना है कि हमें ब्रिटेन के साथ नहीं रहना है। वी शुड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटेन एंड देयर ऑटोक्रेटिक रूल। वी शुड थ्रो देम आउट ऑफ आवर कंट्री एंड मेक आवरसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश क्लचेस. So what happened? This was basically decided in the Philadelphia Congress, and the Britons were thinking that now some resistance would be there. So ब्रिटेन को उन्होंने थोड़ी तरह से हटाने की कोशिश स्टार्ट कर दी. अब what happened? That Declaration of Independence, the next very important thing that happened. अब what was Declaration of Independence? अब जैसे ही क्या हुआ, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुआ, तो यहाँ से चीजें बहुत तेजी से स्टार्ट हुई, जहां पर राइट्स के डिमांड होने लगे. ब्रिटेन से कहा गया कि भाई हमें आजादी दिलाइए, आजादी होनी चाहिए. बट अब what happened? The Britain were they were exploiting the Americans. They were having money from America. तो वो छोड़ना तो चाहते नहीं थे. भाई क्यों छोड़ेंगे, उनसे वहां से पैसे मिल रहे थे. तो उन्होंने सोचा कि भाई अभी थोड़े दिन में शांत हो जाएंगे. बट what happened in 1776? अगेन फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में ये लोग मिले और वहां पर इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया. ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है इन हिस्ट्री, because Declaration of Independence is marked as the very important document which led to the freeing of America from the Britishers. Basically अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1783 में फाइनली, जब ब्रिटेन ने एक ट्रीटी साइन करी फ्रांस में. फ्रांस बेसिकली एक न्यूट्रल जगह थी जहां पर ये लोग मिलकर साइन किए ट्रीटी को, और वहां पे इंडिपेंडेंस हुआ. लेकिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776 में ही आ गया. व्हाट हैपेंड? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो 4 जुलाई 1776 में ही आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं. वी वांट अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और ब्रिटिशर्स को हमें यहाँ से थ्रो करना है, बाहर फेंकना है. जिसमें थॉमस जेफरसन, थॉमस पेन, George Washington, they played a very important role, and they started the American Revolution in an armed manner. Now George Washington leaded, basically he was a leader. He was also the first president of America. So what happened? Independent America, before that he fought against the Britishers, and with the help of the general public he overthrew the Britishers from America, and they signed this Declaration of Independence, which act as a basic document which proved that we should be fighting for our own independence, and that is why 4th July is celebrated as the Independence Day in America every year. It was in 4th July 1776 when it was signed, but America formally got independent on 1783, but they considered that 1776 4th July was the day in which they got independence, because Declaration of Independence was signed. And George Washington led an armed force and a rebellion against the Britishers, in which the Britishers were forced to leave America, and finally America got independent, and they rose to the path of independence as well as growth in their country. अभी अमेरिका में इसके बाद और एक मजेदार इंसिडेंट होगा जो सिविल वॉर का है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है. विल बी डिस्कसिंग दैट. आई होप आपको फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकेंड अमेरिकन रेवोल्यूशन बहुत मजा आया होगा पढ़ने में. If you like this video, please press the like button, subscribe this channel, also like our Facebook page, and hope that you are studying, study well. Thank you.